now today let's start with chapter number 3, heat and temperature. In this chapter I will tell you about heat and temperature. Let's start with the chapter hot and cold. You use the term hot and cold frequently. How do you know that somebody or something is hot or cold? When you walk under the sunlight you feel hot. देखा जब sunlight के अंदर walk करते हैं तो हमें थोड़ा hot feel होता है, ठीक है? So similarly when you dip your finger into a glass of water, how do you feel? Answer is of the question is either hot. अगर पानी गर्म होगा तो hot feel होगा, ठंडा होगा तो cold feel होगा, right? So what is temperature? It is the extent or degree of hotness and coldness of our body. Temperature क्या होता है? एक extent होता है कि एक hotness और coldness को हम जानते हैं body के. An object seem to be cold when the heat from the body flows into it. जो object है वो आपको cold दिखाई देगा if the heat from your body flows into it. Now similarly, the object seem to be hot when heat from the object flow into. Hot कब दिखाई देगा? जब heat flow करेगी. और इस फ्लो ऑफ हीट को फ्रॉम द बॉडी इज हॉट और कूल. एनर्जी क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट फ्लो. जब हीट जो होती है वो कॉन्स्टेंटली फ्लो करती है इनटू आल्सो एंड आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्लूडिंग लिविंग ऑब्जेक्ट. हीट फ्लो मूव्स एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर. ये एनर्जी को फ्लो करता है फ्रॉम हायर टू लोअर टेम्परेचर. द बिगर द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट द फास्टर हीट फ्लोज बिटवीन देम. उतनी ही तेजी से हीट फ्लो करती है. When temperatures are the same, जब टेम्परेचर क्या होते हैं? सेम होते हैं, तो कोई भी चेंज नहीं होता. There is no change. Now heat it is a form of energy. So heat is one of the essential form of energy for the survival of life on the earth. जो heat है वो एक बहुत ज्यादा essential form of energy है that is required for the life on the earth. Heat energy is being used for cooking, ironing, transportation, recreation, and this form of energies play a very important role in nature. The occurrence of wind, rain, या change of season is all dependent upon gradient created due to uneven heating of the different regions. So you will learn about the concept of heat, and now we will classify the object. मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे object को classify करेंगे hot और cool. With the increase in temperature of the body, the vibration of molecules or atom increases. These vibrations are then transferred from one part of the body to another. और जो vibration है ये transform होती है from one body to another. And the measure of energy with which molecules vibrate in the system, it is termed as heat stores that object. Now, why? Because जो मॉलिक्यूल्स हैं आपके, मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग फास्टर ट्रांसफर देयर एनर्जी टू द मॉलिक्यूल्स वाइब्रेटिंग. सो जो तेजी से क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो ट्रांसफर करते हैं टू द ऑब्जेक्ट दैट आर वाइब्रेटिंग स्लोली. नाउ द vibrational energy is also termed as heat content, and the heat content in the body makes it hot or cool. Greater the heat content, better will be the hotter will be the body. जितनी ज्यादा हीट कंटेंट होगी उतनी ही ज्यादा बॉडी क्या होगी? गर्म होगी, राइट? सो द फ्रेंच साइंटिस्ट जैक्विस चार्ल्स, ही डिस्कवर्ड हीट कुड बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मोशन. हीट को हम किसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? इनटू मोशन. नाउ सर जेम्स प्रेस्कॉट जूल इन 19th century फिजिसिस्ट थे. ही लेटर प्रूव दैट जो गिवन अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है? सेम अमाउंट ऑफ हीट. Now, according to this theory, the heat that body possesses is directly related to kinetic energy. जो भी हमारी body heat produce कर रही है वो किससे relate करेगी? Kinetic energy, right? Because energy of motion of the molecule composing the body. The greater the kinetic energy involved, the hotter is the body. जितनी ज्यादा, देखो हम हाथ रब करते हैं ऐसे, ठीक है? हाथ गर्म हो जाते हैं ना, तो जितनी ज्यादा kinetic energy होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा? Body hotter होगी. Now how can you define cold? If you have to define cold, how you will define? Actually there is no such thing from the scientific. तो कोई भी एक scientific point of view से हम बात करें, cold को किसी ने define नहीं करा. But when you say that object A is colder than object B, you mean that कि जो object दूसरा object है उसके पास जो heat है वो कम है, less heat है. In other word, you can say that
All objects are hot at least amount of heat. To avoid confusion, you can say that cool, cooler और colder. ये indicate करता है सर cool थोड़ा ठंडा, colder उससे ज्यादा ठंडा, coldest सबसे ज्यादा ठंडा. बस आप ऐसे क्या कर सकते हो, उसको differentiate कर सकते हो. Now let's do the activity to show how heat can be transferred from one body to another. So take a one page of paper and piece of cloth. Keep the page on the piece of cloth on the table. Then now switch off your electric iron. When the iron gets heated, press paper using iron. आपको 30 सेकंड के लिए प्रेस करना है. Now remove the iron, touch the paper by one hand and the cloth with other hand. You will find that both the things are hot. आप देखेंगे कि दोनों चीजें गर्म है. It shows that heat is transferred from one body to another. पेपर से कहाँ चली गई, क्लोथ पे चली गई. तो ये क्या बताता है कि जो हीट है वो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर. नेक्स्ट इज टेम्परेचर. ये क्या होता है, मेजर होता है एवरेज हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस. सो टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज हीट और थर्मल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन एनी सब्सटेंस. नाउ सिंस इट इज एन एवरेज मेजरमेंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड नहीं होता. You experience temperature every day. देखो जब बाहर गर्म होता है, ठीक है, when it is very hot outside और when you have a fever. देखो ना, हमें बहुत फीवर होता है तो हमें अपनी बॉडी बहुत गर्म फील होती है. And when it is snowing outside, you feel cold. और देखा आपने, जब ठंड होती है तो हमें ठंडा फील होता है. Like when you are boiling water, you wait for water temperature to increase. And when you make popsicles, you wait for liquid to become very cold and freeze. देखा है ना, हम भाई अब ऐसे हमें आइस जमानी तो हम देखते हैं कि हाँ बर्फ जम जाए, कि जो वाटर है वो ठंडा होके इसमें फ्रीज हो जाए, राइट. नाउ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर. बेसिकली वी मेजर टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ थर्मोमीटर एंड वी मेजर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट. नाउ ऑल मेजरिंग थर्मोमीटर यूज सब्सटेंस, जिसे हम मर्करी कहते हैं, उसका यूज करते हैं. Now types of thermometer, there are different kinds. Liquid in glass thermometer, clinical thermometer, thermometer for industry, resistant thermometer और digital thermometer. ठीक है, we have so many types of thermometer. Now first is clinical thermometer. ये slightly क्या है आपका, it is a slight modification of mercury thermometer. जैसे आपका mercury होता है ना, mercury thermometer उस तरीके का ही होता है, इसी तरीके से डिजाइन होता है. Let's study about the scales of thermometer. It is smaller in size that of laboratory thermometer. It has a constriction in a fine capillary tube. एक fine ऐसे capillary tube होती है. ये क्या करती है, प्रिवेंट करती है मर्करी को फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लोइंग बैक. देखो जैसे अगर आपको फीवर होता है तो ऊपर की तरफ छेड़ने लग जाता है, और फिर जब आप उसको वॉश करके रख लेते हो तो मर्करी फिर नीचे की तरफ बैठ जाती है. तो ये क्या है आपका, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड फ्लोइंग बैक ऑफ लिक्विड है. This enables recording maximum temperature of the body without need for haste. The mercury thread needs to be shaken back. हम उसको शेक करते हैं, इससे बल्ब नीचे की तरफ आ जाए. And you can use again. It is measured over a very limited range, that is 35 degree Celsius to 94 degree Fahrenheit. Normal body temperature जो होता है वो आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है. Basically, we have two scales on thermometer. That is your Celsius, Kelvin, and your Fahrenheit. We have basically different scale, जिसे हम Celsius, Kelvin और Fahrenheit कहते हैं. If we talk about Celsius scale, in Celsius scale, the temperature at which pure ice melts at normal atmosphere pressure is taken to be 0 degree. और temperature at which pure water boils under atmospheric pressure, उसे हम कितना है वो आपका 100 डिग्री से. The separation between these two fixed points is divided into 100 equal division, और जो each division है वो क्या मेजर करता है, टेम्परेचर, और जिसमें डिफरेंस होता है आपका 1 डिग्री सेल्सियस. Now Fahrenheit scale. Let's study about the Fahrenheit scale. On the Fahrenheit scale, it is named after Fahrenheit. इसके fixed point होते हैं. If we talk about freezing, it will be your 32 degree Fahrenheit, and boiling, that is 212 degree Fahrenheit. आपको याद रखना है फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट भी और फ्रीजिंग पॉइंट भी. नाउ द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट. यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिया है, जब आप सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में. अगर आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है सेल्सियस से,
तो आपको 9/5 प्लस 32. इफ यू हैव टू कन्वर्ट फ़ारेनहाइट इनटू सेल्सियस, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 5 मतलब इनटू 5/9. नेक्स्ट इज केल्विन स्केल. किसने डिजाइन करा? विलियम थॉमसन ने. ठीक है, whose name was Lord Kelvin in 1848. इसको हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं. What it is known as absolute temperature scale. In this scale, absolute zero is taken as minus 273.16 degree Celsius और minus 459.7 degree Fahrenheit. ये जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है बॉडी की, वो स्टॉप्स हो जाती है और ये सेम साइज का होता है एज डिग्री ऑफ सेल्सियस. Now when you have to convert Celsius to Kelvin, you will use formula Kelvin is equals to Celsius plus 273 और Celsius is equals to Kelvin minus 273. So while reading the temperature on thermometer, keep it horizontally. और आपको ये इंश्योर करना है कि वो एक आई लेवल पे आप क्या कर रखा है, हैंड हैंडल कर रखा है. Now transfer of heat. If you touch a serving spoon kept on a vessel in which some food is being cooked, you will feel that spoon भी क्या होती है, हम खाना बनाते हैं, आपने देखा होगा बहुत बार जब आप जिसमें चमचा छोड़ देते हैं तो वो स्पून भी हीट हो जाती है, राइट. सो हैज द हीट फ्लो फ्रॉम द वेसल टू द सर्विंग स्पून. एक्चुअली हीट एनर्जी जो होती है वो फ्लो करती है कहाँ से? फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट. जो भी हॉट ऑब्जेक्ट होगा और जो भी कोल्ड ऑब्जेक्ट होगा उससे हीट क्या करेगी, कोल्ड ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर होगी. जब खाना बना रहे हैं तो ये वेसल हमारा गर्म हो जाता है, उसके साथ साथ जो स्पून रखा होता है वो भी गर्म हो जाता है. Now heat transfer, it is the process of transfer of heat from high temperature to the low temperature. What is heat transfer? जब heat transfer होती है higher temperature to lower temperature, उसे हम transfer of heat कहते हैं. Like we have conduction, convection and radiation. Let's study about conduction. So the transfer of heat between two solid objects is called conduction. ये किस पे depends होता है? It depends on difference in temperature of hot and cold body. Like conduction of heat transfer. It is when two bodies at different temperature they are kept in. जब दो body क्या एक दूसरे के contact में. When two bodies they are in contact with each other, heat क्या करेगी? Flow करेगी. Another example, heating one end of the copper due to conduction. जो heat होती है वो ट्रांसफर हो जाती है अदर एंड पे और जो मेटल होता है वो भी क्या होता है आपका, हीट हो जाता है. Now to show heat gets transferred in metals. कैसे heat transfer हो जाती है? Now अब you have to take a metal rod, wax, nail or candle. Then take a metal rod and fix nail on it of 4 cm between two nails. और आप मेल्ट करो with a lighted candle. Now keep one end of the rod just about the flame of the candle. After few minutes you will observe that nail begin to fall from the flame. Why does it happen? Actually due to conduction heat get transferred that melts the wax and the nails begin to fall. जब वो melt होती है तो जो nails होते हैं वो गिरने लग जाते हैं. Then we have convection. जब heat जो होती है किसके बीच में ट्रांसफर होती है? Solid surface और liquid surface. उसे हम क्या कहते हैं? Convection heat transfer. Right? Let us consider vessels of water being heated. In this case, heating of water due to transfer of heat from vessel. जो ट्रांसफर हो रही है हीट वेसल से उसे क्या कहते हैं? कन्वेक्शन. सो जो रेफ्रिजरेटर है वो क्या है आपका? वो कन्वेक्शन करता है विच इज यूज्ड टू सर्कुलेट कोल्ड एयर अराउंड द फूड. देखो ना ठंडा रहता है और हमारे खाने को भी स्पॉइल होने से बचाता है. नेक्स्ट इज रेडिएशन. व्हेन टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर एंड सेपरेटेड बाय डिस्टेंस हीट ट्रांसफर बिटवीन देम. जब डिफरेंट टेम्परेचर की दो बॉडी को हम क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं बाय अ डिस्टेंस, तो उसको क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज रेडिएशन. In case of conduction and convection, there is a medium to transfer heat. In case of radiation, अगर हम बात करें conduction और convection के बीच में,
तो यहाँ पे क्या है, मीडियम है जिससे हम हीट को ट्रांसफर करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रेडिएशन की, सो देयर इज नो मीडियम टू ट्रांसफर हीट. So the radiation heat transfer occurred due to electromagnetic waves that exist in the atmosphere. One of the most important example of radiation is the heat of sun that is coming to the earth. वो क्या है, आपकी radiation है. Then we have conductor and insulator. So all material in the solid state do not conduct heat in same manner. Now we will study about conductor and insulator. What are conductors? जो क्या करते हैं, अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में, और इंसुलेटर जो अलाउ नहीं करते. सो लेट्स स्टडी विद द कंडक्टर. आर द मटेरियल और सब्सटेंसेस व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो देम. दे आर एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज दे अलाउ इलेक्ट्रॉन टू फ्लो इनसाइड देम इजीली. ये क्यों ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास फ्लो करने में इजीली? बिकॉज व्हाई? बिकॉज दे क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को अलाउ करते हैं कि वो फ्रीली मूव करें. अर्थ, मेटल, ह्यूमन बींग्स, एनिमल बॉडी, सब क्या है, आपके कंडक्टर. ठीक है, ये क्या अलाउ करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं हीट और लाइट का. व्हाई? बिकॉज रीजन ऑफ द इलेक्ट्रिक शॉक. देखो आप कभी रीजन देखा होगा कि आप कभी प्लग को छेड़ते हैं तो आपको करंट लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, वो इसकी वजह से. द मेन रीजन ऑफ दैट बीइंग गुड कंडक्टर, योर ह्यूमन बॉडी अलाउज रेजिस्टेंस फ्री पाथ ऑफ द करंट टू फ्लो फ्रॉम द वायर ऑफ द बॉडी. Now conductor have free electron on the surface which allows current to pass through it, and this is the reason why conductor are able to conduct electricity. Conductor से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि what they conduct electricity. Now silver, it is the best conductor of electricity. ये बहुत ज्यादा costly होता है. We do not use silver in industry. आपने देखा है कभी हम सिल्वर इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं, ट्रांसमिशन यूज कर रहे हैं? नो, वी कैन नॉट यूज देम. कॉपर, ब्रांज, स्टील, गोल्ड, एल्यूमिनियम, दे आर आल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इनका यूज हम इलेक्ट्रिक सर्किट्स या सिस्टम में यूज करते हैं, वायर बनाने के लिए. आपने देखा कॉपर वायर्स होते हैं. मर्करी, इट इज द एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर. इसका हम यूज करते हैं इंस्ट्रूमेंट में, जैसे मैंने आपको बताया था हम थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं. गैसेस, दे आर नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर क्वाइट अवे. They are unable to conduct electrons. ये इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं कर पाते. Next is your insulator. They do not resist or flow the electricity. current flow नहीं करता है. They are mostly solid in nature. और ये आपके बहुत सारे various system में इनका यूज करा जाता है. Now wood, cloth, glass, pica and quartz. They are also the good example of insulator. Insulator are also protector as they give protection. ये हमें protection देते हैं किसके against? heat और sound के लिए. They do not have any free electron and it is the main reason why they do not conduct electricity. यही main reason है कि ये electricity conduct नहीं करते. Let's see some example of insulator. Like glass, it is the best insulator as it has highest resistivity. प्लास्टिक, ये भी गुड इंसुलेटर है. ये आपको डिफरेंट चीज, देखो हम बॉटल बनाते हैं, प्लास्टिक के कंटेनर्स बनाते हैं, इसका हम यूज करते हैं क्या, अलग अलग चीज बनाते हैं. रबर, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग टायर, फायर रेजिस्टेंट क्लोथ्स, स्लीपर्स होती है रबर की. सो रबर आल्सो इज यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट मटेरियल. Then we have thermoflask. ये डिवाइस है which is designed to prevent loss of heat through conduction and convection as well as through radiation. Next is construction and working. It is a bottle within a bottle, but the two being united only around the top. The inner bottle contains the outer bottle whose temperature is to be kept constant. The loss of heat from material by conduction is greatly reduced by providing no path along with the heat can flow. So both the glass and the cork are poor conductor. जो glass होता है, जो cork होता है, दोनों क्या होते हैं, poor conductor of heat होते हैं. So the heat cannot be transferred from inner bottle or to the outer one by convection since all the air has been removed from the space. जितनी भी स्पेस होती है वहां से सारी जो एयर होती है वो आपकी रिमूव कर दी जाती है. फाइनली जो ट्रांसफर ऑफ हीट है फ्रॉम द इनर बॉटल टू आउटर वन, इट इज जनरली रिड्यूस्ड बाय सिल्वरिंग. देखा ना वो कैसे, जो बॉटल आपने देखा होगा सिल्वर कलर की होती है, तो हम सिल्वरिंग कर देते हैं जिससे वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए. नाउ
and any heat that penetrates the glass of the inner bottle is bound to be reflected from the silver coated surface. Because of this threefold protection, the contents of thermoflask can be kept hot or cold for a longer period of time. ये hot भी रहता है और आपने देखा होगा पानी cold भी रहता है for a longer period of time. Now we have completed this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. That's all for today. Thank you.